Hello everyone, it's Avanti here from Avanti's Tutorials. Today we will see the remaining part of comparing quantities related to profit loss and interest. Long back I have posted certain videos on comparing quantities, but as I said, comparing quantity itself, it is a combination of four different topics. So it will take time for us to go with one after the another one. So today we will see overhead expenses and successive discounts. I repeat, today we will see overhead expenses and discounts. Before I start, yes, as usual, I request all of you, please do like, share and subscribe my channel. माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, like करा, share करा. So overhead expenses we will see first. Overhead expenses. The name itself indicates overhead, additional expenses, additional पैसा देणे. कसं काय? For example, we buy certain things and then we have to pay transport charges apart from the selling price. घेतलेल्या वस्तूच्या किमतीपेक्षाही 100, 200, 400, 600 आपल्याला जास्तीचे द्यावे लागतात. कधी ते ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस असतात, आणखीन कुठल्याच्या लेबर चार्जेस असतात. मग ते कॅल्क्युलेशन कसं करायचं ते आपण पाहू. आता मॅथमॅटिक्स म्हटल्यानंतर एक्झाम्पल घेतल्याशिवाय ते कळणार नाही आहे. आणि बोर्डची साईज पाहता ती थोडीशी छोटी आहे, त्यामुळे एक्झाम्पल्स मी आज पेपरवरती लिहून आणलेले आहेत, वर्ड प्रॉब्लेम्स. कारण वर्ड प्रॉब्लेम जर मी बोर्डवर लिहिला तर अर्धा बोर्ड त्याने ऑक्युपाय होतो. I have written the exemplars on the page. What problems that I'll read, because if I would have written on the board, my half of the space would have been occupied by the board itself. So the example for overhead expenses I have with me is Abha spent rupees 4,500 on a table. Abha, it's the name of a girl. She has bought a table. Abha लड़की का नाम है. उसने एक टेबल बाय किया है मार्केट से जिसका प्राइस है 4,500. शी ऑल्सो स्पेंट ₹200 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन. एडिशनली शी हैज स्पेंट 200 अपार्ट फ्रॉम दैट 4,500. 4,500 से ज़्यादा भी उसने दिया है 200 रुपये ट्रांसपोर्ट का. एट व्हाट प्राइस शुड शी सेल? उसने वो आगे अगर उसको सेल करना है, बेचना है, तो कितनी कीमत में बेचना चाहिए? वेयर शी विल गेन अ प्रॉफिट ऑफ ₹8%. उसको 8% का प्रॉफिट होना चाहिए. नाउ सी डेलिबरेटली टुडे, और ये जो मैं पेज पे लिख के लाई हूँ, दिस आई हैव डन डेलिबरेटली because in my initial videos I have mentioned that point also, as and when it was required, जहाँ जहाँ ज़रूरी था. वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चे सॉल्व करते समय बहुत उनको दिक्कत होती है. द रीज़न इज़ दैट दे आर नॉट रीडिंग देम बाय गिविंग द पॉजेस. जो भी सम आपको दिया जाता है उसको पॉज देके सेंटेंस में ब्रेक करके रीड करना है. हर एक सेंटेंस का मीनिंग समझ लेना है. गिवन क्वांटिटीज़ क्या है, व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज़ विद अस, और हमको क्या ढूंढना है. सो वाइल रीडिंग ऑल्सो यू माइट हैव नोटिस्ड कि मैंने एक एक सेंटेंस को भी ब्रेक किया है जहाँ मुझे ज़रूरी लगता है. मैंने खुद समझा है एंड देन आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. Same thing you have to do in exam. Now you will say, ma'am, in exam there is no time. See, practice makes man perfect. If you inculcate this habit, a day will come whereby reading it in mind within a fraction of a second you'll be able to solve the sums. ऐसा एग्ज़ाम में करेक्ट है कि आपके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर ये हैबिट आप डाल दोगे और इसका इनकलकेशन मतलब आज से शुरू करोगे, आज 5 मिनट में एक ही सम कर पाओगे, लेकिन यही मेथड से 8 दिन बाद 3 सम्स कर लोगे आप लोग. और एग्ज़ाम के लिए भी हाउ टू सॉल्व द पेपर मैंने पीछे भी बोला था प्रीवियस वीडियो में. आई सेड दैट आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो हाउ टू राइट अ पेपर and how to study when you come at home. So one video I'll be posting on that certain things also. So today again then. So what I'll do is now after reading this I'll reread it. Read it means फिर से मैं पढ़ूंगी and I'll write first what I have with me, that is given quantities. So given what I have with me now, spent means this is now कॉस्ट प्राइस. आप बोलोगे मैम ये कॉस्ट प्राइस कैसे हो गया? आभा भी इसको आगे सेल करेगी तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस ही हो गई. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हाट इट इज टेबल.
rupees 4,500. Overhead expenses, how much she paid? Rupees 200. What we are supposed to find? We are supposed to find is selling price to gain a profit of 8%. So solution में first step is total cost price निकाल लो. Solution, first CP is rupees 4,500. Overhead expenses is rupees 200. Therefore total CP, total cost price, will be 4,500 plus 200, and this becomes how much? Rupees 4,700. This becomes your total CP. पूरी cost price हो गई है. Now you make it 8% of this one. 8% of total CP. Percent यानी कि divided by 100 of multiplication. 8 sevens are 56, carries 5. 8 fours are 32 plus 5, 37. Rupees 376. What it is? Profit. Now you have to add this to this one. So total selling price would be the total CP plus your profit. So what is the total CP? 4,700 plus this 376. So what it becomes now? This is 6, 7, 5,076. So Abha should sell that particular table for rupees 5,076. So what I did is, first I made myself comfortable with reading the sum. I sorted out with the given things. Then I sorted out what I'm supposed to calculate, that is to find, and then in solution I mentioned it. So these are overhead expenses sums. Now this is not only one sum. There will be n number of sums based on this. This is one. Here they asked us this the total selling price. In some sums they will ask you mark price. In some they will ask you discount. In some they will ask you gain percent, profit percent. So all that sums I may be posting shortly in my description box, or else I may be explaining the sums first one after the other. That would be a practice exercise video. That would be exam oriented. I will be posting maybe after this month. Now next is I said is successive discounts. Name itself successive. एक से ज़्यादा. Whenever a discount is given on an article, more than one discount is given. एक ही आर्टिकल पे एक से ज़्यादा डिस्काउंट दिया है, या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स पे डिस्काउंट्स है एक से ज़्यादा. So how? So again I have example with me. All sarees are on a sale. साड़ी की शॉप है, सभी sarees का सेल निकला हुआ है, and there is a 10% discount. A 10% discount is being offered on all sarees, and an additional discount of rupees, 25% is offered on kota sarees. Kota, it's a type of fabric, okay? फैब्रिक है, लेडीज़ को पता होता है. कोटा साड़ी मतलब सभी साड़ीज़ पे कॉमन 10% डिस्काउंट है, लेकिन कोटा साड़ीज़ पे वो 10% प्लस 25% अलग से है. So एक कोटा साड़ी निधि wants to buy a कोटा साड़ी has marked price of rupees 1800, that is 1800, and निधि want to buy it. How much she has to pay? So निधि नाम की लड़की को वो साड़ी बाय करने वो कितना पे करेंगी? So in this what we will do is, first we will calculate the common discount of 10% on 1800. Whatever answer we will get it, 25% of that we will calculate, and that is to be paid by Nidhi. So let's see. So this is successive discount. Now successive, देखो समझ में आया होगा. Successive एक से ज़्यादा डिस्काउंट है, पहले 10% का है, फिर 25 का है. So एक के ऊपर दो है ना. सक्सेसर प्रेडिसेसर पढ़े ना, प्रेडिसेसर यानी पीछे एक, सक्सेसर यानी मीन्स add one, add on होना. Successive means to add on. So successive discounts.
what is with us? Selling price of a saree is rupees 1800, or else we will write mark price. Yes. What you have to find? Selling price. So in solution, and what is given here? Discount 1, first is 10% and discount 2 is 25%. So first we will calculate selling price on or for discount 1. So 10% means 10 upon 100 of 1800. It's rupees 180. Now you can't stop here. Then you will take selling price equals to marked price minus discount. So this becomes 1800 minus 180. So how much it gives you? 1620, if I'm not wrong. Check it. Yes, 0, 10 carries 1. Yeah. So this is, यहाँ पे रुकना नहीं है, इथेच थांबायचं नाही आहे. काय केलं? आधी आपण पहिला डिस्काउंट काढला 10% 1800च्या 180 आला. हा फक्त डिस्काउंट आहे. मग 1800 मधनं 180 सबट्रॅक्ट केले, 1620 आले. आता 25% ऑफ 620, कारण हा 10% कॉमन सर्वांसाठी आहे. कोटा सारीसाठी ॲडिशनल आहे परत 25%. म्हणजे एका कोटा सारीवर टोटल डिस्काउंट किती झालेला आहे? 35%. काही मुलं असं पण सॉल्व करतात, 10 + 25 and 35. But there is a little chance of confusion and making mistakes. So better to avoid the mistakes. And then now selling price for discount 2. So that becomes 25% of 1620. This gets cancelled here. 5s are 2s are. 2 1s are 2 8s are. This is 5 into 81. So 5 1s are 5, 8 5s are 40. So she has to pay rupees 405. So a saree costing rupees 1800 है मार्क प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस ये सारा डिस्काउंट करके 405 बन जाएगा. This much she's supposed to pay. Nidhi. Hope I tried to make it useful. This is for class 7 and 8. प्रॉफिट एंड लॉस का एडिशनल पार्ट है ये. ओवरहेड एक्सपेंसेस डिस्काउंट का, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का एडिशनल पार्ट है ये. ओवरहेड एक्सपेंसेस सक्सेसिव डिस्काउंट. और एक है वैल्यू एडेड टैक्स. In next video I'll be posting value added tax and compound interest. So before I stop, I request all of you, please like, share and subscribe my channel. Your subscription means a lot. Thank you.